Good morning, Sydney. This is Cricket and Curry that connects India and Australia. And when we have curry and cricket, Sydney Cricket Ground, and judges from the Master Chef, what else can we expect? How are you, sir? Vikas ji, Kunal ji, Jorawat ji, welcome to the show. आज आपका final shoot खत्म हुआ है. You got the final, 4 going in the finale. Absolutely. Wonderful. How has the journey been right from the first day until today? I think when we started the Master Chef journey, it was difficult because पता क्या है कि इतने हज़ारों लोग हैं और इस बार हमने सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं वर्ल्ड ओवर घूम कर होम कुक्स इकट्ठे किए थे, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है आई थिंक वो पहले 16 तक लाना। और जब जर्नी स्टार्ट होती है तो लगता है कि अभी तो बहुत आगे जाना है, काफ़ी हफ्ते हैं, बट फाइनलिस्ट चूज़ कर रहे हैं और वो सिलेक्ट भी हो गए। सो आई थिंक इट्स बीन अ रोलर कोस्टर ऑफ अ राइड। बहुत मज़ा आया, अप्स एंड डाउन्स, ट्रायम्फ एंड विक्ट्री, साथ ही साथ लॉसेज और हार्ट ब्रेक्स, but in the end some fantastic food, some fantastic spirit, some fantastic sportsmanship in cooking, and we're very happy about it. I think the journey right from the inception of the show and the very first episode has been amazing. The three of us have got a great chemistry. I've known him for a long time. I met the cast on the show, and now all three of us are very close friends. And just to be part of a talent show of this caliber, of this stature, of this magnanimity is truly astounding. The level of talent, the level of skill on display makes me feel proud to be a part of the Indian diaspora. And I think all your viewers watching are also part of the wonderful Indian diaspora, adding a lot of value to New Zealand, Australia, all these wonderful places. It's a perfect showcase. So the journey has been a lot of fun. It's been a little challenging, of course, because it's very difficult to choose amongst great dishes. And I think the hardest part of the show is actually to kind of make that decision. Which dish out of these 4 amazing dishes is the best, and sometimes it becomes a very ardent task. So I think overall it's been an outstanding experience, but one that has been very fulfilling and rewarding, as well as challenging at times, but it's been great. Sydney में ये जो production हुआ, what do you say? How did Sydney treat you overall? Oh, it was beautiful, I think. बिल्कुल लगा ही नहीं कि कंट्री से बाहर हैं आप. I think Sukha Productions was the people. That's right, that's right. और एक तो होती है प्रोडक्शन जब आप शूट कर रहे होते हैं तो इट्स डिफरेंट, बट यहाँ पे ऑन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन एवरीथिंग वाज एज ब्यूटीफुल, हॉस्पिटेबल। आई थिंक बहुत मज़ेदार रहा हमारा यहाँ पे शूट। सिडनी एक खूबसूरत शहर है, मौसम ने हमारा बहुत साथ दिया। खूबसूरत हवा चल रही है, साफ़ सुथरी जगह है, एक डिफरेंट एनर्जी है यहाँ पर। हिंदुस्तान से आ रहे हैं, जब आए थे तो जेट लैग था, अब दिन टूट रहा है कि वापस जा रहे हैं। विश कर रहे थे कि थोड़ा और लंबा यहाँ पे सफ़र होता, बट या इट्स अबाउट टाइम टू गो होम। बट बहुत सी अच्छी यादें लेके जा रहे हैं, एंड डेफिनेटली सिडनी में वापस ज़रूर आऊँगा। It is a lovely experience to be shooting in Sydney Cricket Ground. Yes. One of the best stadiums all around the world. What do you say about it? यस डेफिनेटली, इतना खूबसूरत स्टेडियम है यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड में, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में हम लोग हिंदुस्तानी कुकिंग कर रहे हैं। आउटडोर बारबेक्यू हो रहा था, जो आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस का फेवरेट है, और जो इंडियंस भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में उनका भी अब फेवरेट है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिकेट एंड करी, लाइक यू सेड, एंड या हियर वी आर। Traveling all around the world, what's your favorite destination other than India and New York? मुझे भूटान बड़ा पसंद है, वेरी गुड। बहुत ज़्यादा। नेपाल भी अच्छा है। भूटान, पारो, स्पेशली वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़। आई थिंक इट्स टोटली डिफरेंट देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। Kunal ji? इज ऑस्ट्रेलिया, आई लव ऑस्ट्रेलिया। Australia, this is for you. जी मेरे वास्ते तो सब तो बढ़िया जगह हिंदुस्तान ही हैगी, हमेशा ही रहेगी। बट सिंस योर क्वेश्चन वाज वेरी फोकस्ड, यू से आउटसाइड ऑफ इंडिया, I think I cannot name one place. I love traveling. I love traveling all over the world. I think even I would agree with both of them. कहते जो सुख छज्जू दे चुबारे और ना बल्क ना बुखारे. I fully agree with you. Okay, moving on to the next one. There's a lot of stress when you're cooking. In the kitchen, outside the kitchen, guests waiting, people coming. You being in the restaurant business, you being wonderful chefs, have been feeding different people all from the community. How do you de-stress yourself? ਜਦੋਂ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਥਕਾਵਟ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? आई थिंक मेरा डी स्ट्रेस है म्यूज़िक, ट्रैवलिंग, स्विमिंग। these are 3 things जो मुझे डी स्ट्रेस करते हैं। और आई थिंक जो वो ट्रैवलिंग हम करते हैं, दैट ऑल्सो कीप्स यू आउट ऑफ द किचन, तो थोड़ा स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। प्लस थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ औरों को देते हैं, वो आपकी जगह थोड़ा काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो अपना थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कभी कभी कम हो जाता है। I think for me,
I'm a big sports car fan, so I am lucky enough to be born in a place where there's a Formula One racetrack nearby. So I take my cars out whenever I can to the racetrack, try and set good times, and I like playing golf. But truly, my real stress busters are my 2 kids. I mean, they are awesome. One look at them and I forget the entire day's stress. In fact, the entire week's stress. So I think, all said and done, at the end of the day, going home, chilling with those 2 cuties, and just doing regular daddy stuff with them is the most de-stressing thing. Can you name the kids? Fateh Singh Kalra and Alia Kalra. Perfect. Fateh, Alia, see, Dad loves you. Even if in Sydney, still remembering you. Loves you a lot. Vikasi, you have cooked for the White House. How has the experience been cooking in the White House for those all the guests? I think it was a very different experience क्योंकि मेरे को invite किया गया था कि Hindu America Service Committee से और 2 meals मेरे को करने थे, lunch और dinner. तो lunch तो I cooked from the common man food of India, very regional. और dinner I did as a dedication to Mahatma Gandhi. और उन्होंने मेरी डॉक्यूमेंट्री दिखाई वहाँ पे होली किचन्स वेयर आई टॉक्ड अबाउट सिखिज्म एंड हाउ लंगर्स हैड इवॉल्व्ड. सो विच वाज मेरा एक्चुअली उस पर जब लोग खड़े होकर तालियां मारते हैं तो मुझे तो बड़ा अजीब लगा बिकॉज मतलब इतना कॉमन इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, बट फॉर द वर्ल्ड इट्स समथिंग सो नॉवल, इट्स समथिंग सो ग्रेट, लार्ज, ऑनेस्ट, गिविंग, फॉरगिविंग बोथ, और समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा एक हमारी जो सोसाइटी है जिससे बैलेंस करती है चीज़, इक्वलाइज करती है. मैं तो सिर्फ वो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री मेरी 32 मिनट की, तो बट उससे सारे पागल हो गए थे वहाँ पे. तो जब उन्होंने बुलाया बोलने के लिए, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम पे. एक्चुअली इट वाज यू फेल्ट कि आपने अपने कल्चर, अपनी रूट्स को एक ट्रिब्यूट दिया एक तरह से, और यू ब्रिंग इट टू द फर्स्ट वर्ल्ड एंड ब्रिंग इट टू देयर अटेंशन, टू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी इन US. Is there any plans of starting an institute teaching cooking in India from your side? There are already too many institutes, but with the wealth of experience that you have, this institute's going to be something different outside the scale. Any plans for that? To be honest, yes, I have been contemplating opening up an institute, which I want to call, name after my father, Jigs Kalra Institute of Culinary Arts, where I want to propagate the career of cooking and chefs, because I and my father have long been champions of cooks and chefs. We think it's the most noble profession there is, or at least one of the most noble professions. And even now in some parts of India, it's considered a vocation and not a career. What I want to do is set up an institute that changes that mindset, makes cooking and being a chef and devoting yourself to your craft and your passion a viable, amazing, rewarding career. And that's what that institute will do. I don't know when it's going to open, honestly. I'm very busy with my other business right now, but it's definitely on the cards and something that I'm going to, hopefully, God willing, be able to do very, very soon. And the whole goal will be to push Indian talent to a global platform. The people who want to choose this profession with a passion. With passion. If you're not passionate, we would not even recommend getting into this, because ask them, it's one of the most stressful professions in the world. And I think it's just something that you have to accept as a lifestyle choice rather than a job or even a career. It has to be a lifestyle choice. And if you're comfortable with it, then you shall succeed. Before we go, any message for the upcoming cooks or the chefs who want to get into the field? I think सिर्फ इतना ही मैसेज है. For the first 5-6 years, put your head down, learn. जितना आप सीखेंगे उतना ये जो स्किल है ये बढ़ चढ़ कर बोलेगी. Once you have the skill, you have the power. Once you have the power, use that power. Till then, learn. जिस जो भी इंसान आपको सिखा सकता है उसको अपना गुरु बना लो. You know, I think he said it so beautifully. I would only want to add on to that, because he's already succinctly put everything together. That, don't do this only if you're truly passionate about it. It's very, very, very challenging, but very rewarding. So you have to devote yourself fully. It's not a part-time thing. It's not a hobby. It's much more than a hobby. It's a lifestyle choice. So do get into cooking. I think it's the most amazing profession there is, most noble. But get into it with your full heart. Message for the Fiji Times readers and viewers. क्या कहना चाहेंगे? हमारे फिजी टाइम्स पढ़ने वालों को, उनको न्यूज़ शेयर करने वालों को, उनसे इंस्पायर होने वालों को विश यू ऑल द बेस्ट. एंड आई थिंक इट्स अमेजिंग जो आप कर रहे हैं. आप हमारे इंडिया के एम्बेसडर्स हैं टू ब्रिंग आवर टैलेंट टू अटेंशन टू द वर्ल्ड. योर वर्क इज़ मच हार्डर देन आवर वर्क. हम तो एक क्रिएट कर रहे हैं, अब दुनिया को सारे यहाँ पर देश लेके जा रहे हैं. Thank you so much for joining me on the show. Thank you so much.